Good morning, dear students. Today we'll be doing the third chapter, Human Reproduction. In the previous lecture, we talked about the process of fertilization and implantation. In today's lecture, we discuss it furthermore. In the previous lecture, we read about first the process of fertilization, and during the process of fertilization, what happens from the ovary, follicular cells are formed. Within the ovary, follicular cells are formed, which include the primordial follicle, then primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and finally the mature follicle, which is also known as Graafian follicle. The Graafian follicle degenerates and the ovum in the form of secondary oocyte is released. This happens at the mid of the menstrual cycle. It is usually the 14th day of menstrual cycle. In ovulatory phase, the ovum in the form of secondary oocyte is released and move into the Graafian follicle. And move into the fallopian tube. This one is the fallopian tube. It moves from the ovary into the fallopian tube and stay at the ampullary region of fallopian tube. It wait in the ampullary region till the sperm came. Millions of sperm came into the fallopian tube, and finally at the ampullary isthmus junction, in which the isthmus region and ampullary region attaches, is in this particular region the sperm and secondary oocyte fuse, or the process of fertilization takes place. After fertilization, the fertilized secondary oocyte move towards the isthmus and finally reaches the uterus, and the secondary oocyte attaches with the endometrium, and the process of attachment of secondary oocyte within the endometrium within the uterus wall is called implantation. It attaches for nourishment, further nourishment. So after this, what happens? First of all, the zygote is formed. The zygote is formed when the sperm, let us suppose this one is an sperm and this one is an egg or ovum or secondary oocyte. Let us suppose this one is secondary oocyte and this is the acrosome. The acrosome connect with the wall, zona pellucida. The acrosome releases some lytic enzymes, and these lytic enzymes digest the wall, and finally let us suppose this one is the secondary oocyte nucleus, this one is the sperm nucleus, and this one is the proximal centriole. The sperm nucleus plus centriole came within the cytoplasm of the secondary oocyte. Finally, these two nuclei get fused. It is diploid nature, and this structure is called zygote. So this one is the zygote, which is
a diploid tissue. Why it is diploid? Because sperm nucleus is haploid, as well as the secondary oocyte nucleus is also haploid. These two haploid nuclei get fused to form a diploid zygote. After the formation of zygote, the further procedure is the division of zygote. Zygote nuclei divides again and again, and such divisions are called, जब ये जाइगोट का जो न्यूक्लियाई है इसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन होना है, कंटिन्यूस डिवीजन होना है, और इस डिवीजन के बाद इसमें डिवीजन होने से फाइनली कई सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस फॉर्म होती हैं. देयर आर सो मेनी डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइक मोरूला, ब्लेस्टूला एंड गैस्ट्रूला. So first of all, the zygote nuclei divide, and the division of zygote nuclei is called cleavage. So the process of cleavage starts. Cleavage is usually a type of mitotic division. It is a type of mitosis division. But the only difference between mitosis division and cleavage is that during mitosis division, after each successive mitosis, two same sized cells are formed. It means अगर एक सेल में डिवीजन होता है तो दो सेल जो बनेंगी वो इक्वल साइज की होंगी और अपनी मदर सेल के बराबर होंगी. बट ड्यूरिंग क्लीवेज, आफ्टर ईच सक्सेसिव डिवीजन, सेल, द नंबर ऑफ सेल विल बिकम डबल. सेल तो डबल हो जाएंगी, लेकिन सेल का साइज जो है वो पेरेंटल सेल से हाफ रह जाएगा. So what happens? Zygote is there. Zygote divide. This is the this division is called the first cleavage. And two cells, two nuclei are formed. Then second cleavage. Four cells. And then third cleavage, 8 cells. Then fourth cleavage, 16 cells. So finally 8 to 16 celled structure is formed, and this structure is called morula. 8 to 16 celled structure is formed, which structure is called morula. So the process of cleavage is also known as morulation. After fertilization, the first division initiate at 24 hours. After fertilization, morula is usually formed 3 to 4 days after fertilization. We also mentioned earlier that the name morula is taken from a plant. The name of the plant is Morus alba. Which is the mulberry tree. And if you see the fruit of mulberry tree, it looks like the morula. मलबरी ट्री के अगर आप फ्रूट को देखेंगे तो उसमें भी छोटे 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 आपको कई सारे पार्ट्स दिखेंगे, और वैसा ही स्ट्रक्चर इस मोरूला का भी होता है. दिस सीम्स टू बी द सिमिलर स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई द नेम मोरूला इज गिवन टू दिस स्ट्रक्चर. आफ्टर morulation, the further development takes place, but further division takes place, and during this the outer cells and inner cells are differentiated. The pattern of division and the speed of division is slightly different in the outer core region, in the outer region and the inner core region. So this outer region
is called the outer cell mass and the inner region is called the inner cell mass. Now, cellular differentiation starts. अभी तक तो सारी सेल्स एक थी, अब ये सेलुलर डिफरेंशिएशन यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है. What happens? This one is the outer cell mass and this one is the inner cell mass. The outer cell mass is also called trophoblast. The another name of outer cell mass is trophoblast. While the inner cell mass finally form the embryo proper. ये outer cell mass ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा और ये इनर सेल मास जो है ये आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगी. इस आउटर सेल मास का द बेसिक वर्क ऑफ दिस ट्रोफोब्लास्ट और आउटर सेल मास इज द अटैचमेंट, implantation. During the process of implantation, these trophoblast cells attaches with the endometrium of uterus. तो ये यूट्रस की सेल में यूट्रस की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, उससे अटैच होने में ट्रोफोब्लास्ट वर्क करेगा. और इनर सेल मास इज द मेन रीजन बिकॉज यही इनर सेल मास आगे चलकर प्रॉपर एम्ब्रियो बनाएगा. तो इनर सेल मास से आगे क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो प्रॉपर. ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंटल प्रोसीजर these cells arrange in a very specific manner. ये सेल्स का अरेंजमेंट होगा, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैनर से अपने आप को अरेंज करेंगी. और जब ये अपने आप को अरेंज करेंगी इस स्पेसिफिक मैनर में, तो होगा क्या कि ये तो आपको समझ रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट है, बीच में ये इनर सेल मास है या एम्ब्रियो, आगे चलकर एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा. एक ब्लैंक कैविटी बन जाएगी. अब ब्लैंक cavity is formed, vessel is formed, which is later on filled with some fluid, and this fluid filled cavity is known as blastocele. A cavity is there which is filled by some amount of fluid, and this fluid filled cavity is called blastocele. So finally blastocele is there. And when blastocele is formed, the structure is called blastula. So embryo can develop in many stages. First, the zygote is formed after fertilization. After the formation of zygote, morula is formed due to cleavage, continued cleavage. 8 to 16 cell morula is formed. After morulation, the next procedure is blastulation. The formation of blastula from morula is called blastulation. It further change in a specific, it further move in a the cells of this blastula move in a sequential manner, a very specific sequential manner, and form a structure like this, and this structure is called gastrula. And the process of formation of gastrula is called gastrulation. During gastrulation, the blastocele, which is fluid filled cavity, slightly degenerates. A new cell is formed. This is called gastrocele, और ऑल्सो नोन एज आर्किएंट्रॉन. गैस्ट्रोसील को ही हम आर्किएंट्रॉन भी कहते हैं. और ये आर्किएंट्रॉन जो है ये फाइनली डेवलप हो जाएगी, जो गट है ये गट में कन्वर्ट हो जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्पेस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. दिस पोर इज ब्लास्टोपोर. ये माउथ फॉर्म करने में हेल्प करेगा. And finally, this blastula is turned out to become a gastrula, and
The main feature of gastrula is the presence of three germ layers called ectoderm, mesoderm, and endoderm. Ectoderm, mesoderm, and endoderm. This is the main feature of gastrulation. गैस्ट्रूला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है डेवलपमेंट में. क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है गैस्ट्रूला? क्योंकि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, और इस थ्री जर्म लेयर्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग भी है. यहीं पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है. अभी तक ये सेल्स को पता नहीं था कि इनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन गैस्ट्रुलेशन से हर एक सेल को अपना फ्यूचर पता होता है. तो सेल्यूलर फेट इसी स्टेज में गैस्ट्रूला में डेवलप हो जाती है. इट मीन्स जो ये एक्टोडर्म है, ये आगे चलकर एक्टोडर्म जो है ये आगे चलकर ब्रेन और स्किन इस तरीके की चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है. मीजोडर्म ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, bone, somites means the initial muscles, so somites बनाने का काम करेगा. जबकि एंडोडर्म जो है वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का काम करता है. सो ये एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल फेज है. जाइगोट, देन क्लीवेज, देन मोरूला, then blastula. The characteristic feature of blastula is the presence of blastocele. Then again it change into gastrula, and the characteristic feature of gastrula is the presence of three germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Ectoderm form brain, mesoderm blood vascular system, bone, muscles, while endoderm form the digestive system and digestive organs, and respiratory system and respiratory organs like lungs. इस पूरी प्रोसीजर को एक बार हम फिर से जरा समझते हैं सिक्वेंशियल वे में क्या हुआ था. ड्यूरिंग कोइटस और ड्यूरिंग सेक्स मेल से सीमेन आया था. सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म थे. ये प्लेस हुआ था वेजाइना में. वेजाइना से ये सर्विक्स में गया. सर्विक्स से यूट्रस, और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में. फैलोपियन ट्यूब में ये सबसे पहले गया इस्थमस में स्पर्म. इस्थमस से जाते हुए ये पहुंचे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, विच इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया. कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ? इसी के साथ साथ क्या हुआ था? ओवरी थी. ओवरी में फॉलिक्यूलर सेल्स थी और ग्रेफियन फॉलिकल बनाई. और यहाँ से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte आ गया था, और स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो गया. इस प्रोसीजर में सबसे पहले जो स्पर्म के पास एक्रोसोम है उसने डाइजेस्ट कर दिया था जोना पेल्यूसिडा को, तो स्पर्म पेनिट्रेट द जोना पेल्यूसिडा, एंड फाइनली स्पर्म और सेकेंडरी oocyte फ्यूज हुए, और रिजल्टेंट इज ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी. द सेकेंड पोलर बॉडी विच इज ऑफ नो यूज इज ऑल्सो फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गई थी. आफ्टर दिस ओवम और स्पर्म न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाते हैं, जो हम अभी यहाँ दिखा रहे थे. दिस इज द ओवम न्यूक्लियाई एंड दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियाई. ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, और द फ्यूजन बाई प्रोडक्ट इज जाइगोट. ये जाइगोट आगे चलकर क्लीवेज करेगा. क्लीवेज करके क्या बनाएगा? मोरूला. अभी हमने देखा था मोरूला. मोरस अल्बा से हमने बोला था इसका नाम बना है. देन ब्लेस्टूला. दिस इज द ब्लेस्टूला. हमने देखा था कि ड्यूरिंग द ब्लेस्टूला स्टेज outer cell mass and inner cell mass is formed. The outer cell mass is also known as trophoblast, जो
इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, और इनर सेल मास जो है यही आगे चलकर एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा। सो मोरुला इज देयर, मोरुला से ब्लेस्टुला बना, blastula change into gastrula, and the characteristic feature of gastrula is the presence of three germ layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. And finally, after gastrulation, embryo is formed. So this is all about the topic fertilization and implantation. Hope you all are getting my points. Thank you so much.